Hello everyone and welcome back to my channel Yashika Classes. In today's video we'll study a very important topic of English grammar, that is tenses. So students, according to you, what are tenses? See, tenses is basically related with two terms, that is work and time. टेंसेस वो रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कौन सा काम कितना हुआ है और किस टाइम में हुआ है. ठीक है. नाउ वी ऑल आर वेल अवेयर दैट टाइम इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, दैट इज़ प्रेजेंट, अभी का टाइम, पास्ट जो बीत गया, एंड फ्यूचर आने वाला टाइम. राइट. सो टेंसेस बेसिकली टेल अस द वर्क एंड टाइम. नाउ work can be divided into 4 parts. First one is indefinite, second is continuous, third is perfect, and fourth is perfect continuous. So in this video we'll study about indefinite tense, यानी कि इस वीडियो में हम simple tense के बारे में पढ़ेंगे तीनों phases में, present, past and future. Okay, and we'll study about next left 3 time zones in next video. यानी कि ये बाकी के 3 जो वर्क के बारे में उनको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. So let's begin with present indefinite और simple present tense. See, simple present tense is very easy. ये बेसिकली यूज़ होता है किसी की हैबिट, यानी कि ऐसी चीज़ जो रोज़ होती है, डेली बेसिस पे होती है, उस चीज़ को अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो वी यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है. अ जनरल ट्रुथ जो कभी चेंज नहीं होगा, दैट विल रिमेन सेम थ्रू आउट, ऐसी चीज़ को अगर हमें एक्सप्रेस करना है सो वी यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस. फाइन. इसके अलावा व्हाट इज़ हैपनिंग, मतलब कि जो डेली में क्या हो रहा है, जैसे मैंने पहले बोला कि जो चीज़ डेली होती है, जो सेम रहती है, उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. अब इसका रूल क्या है, सेंटेंस जो फॉर्म होगा कैसे फॉर्म होगा. इसका रूल होता है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन्स द पर्सन हु इज़ डूइंग द वर्क, जिसके बारे में बात हो रही है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस एस और एस, प्लस ऑब्जेक्ट. फाइन. नाउ लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल. राम ड्रिंक्स मिल्क. इसमें सब्जेक्ट क्या है इन दिस सेंटेंस? सब्जेक्ट इज़ राम बिकॉज राम इज़ डूइंग द वर्क, सो सब्जेक्ट इज़ राम. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज़ ड्रिंक, ड्रिंक की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक ही होती है, प्लस एस और ई एस. नाउ हाउ विल यू चूज़ दैट वी हैव टू ईदर पुट एस और ई एस? दिस वी विल डिसाइड बाय सीइंग द सब्जेक्ट. इफ़ द सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर, यानी कि जैसे इस सेंटेंस में राम जो है वो सिंगुलर है, तो हमने यहाँ पर एस लगाया. अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो हम ना ही तो एस लगाएंगे ना ही ई एस लगाएंगे. I repeat, if subject is singular, then we will either add s or es depending upon the verb. But if the subject is plural, like seeing in the third example, they plural है, so verb will neither take s nor will it take es. Fine, it will stay the same, only verb की first form. Fine, I repeat, rule is subject plus verb first form plus s or es plus object. Now children, moving on to next tense, that is simple past tense. Now simple past tense or past indefinite tense is basically used to express an action that is completed in the past, जो already past में ख़त्म हो चुका है. इसका रूल क्या है? What is the rule? So rule for simple past tense is subject plus verb second form plus subject. Fine. Let's see in the example. We ate many chocolates yesterday. यानी कि ये काम कल ही ख़त्म हो चुका है, तो it is simple past tense. तो now in this sentence, we is subject, ate is the second form of the verb eat. Eat, ate, eaten. And many chocolates yesterday is object. Understood simple past tense? Now next type of simple sentence is simple future tense or future indefinite tense. Now children, future indefinite tense or simple future tense is used to express an action that will happen in future, जो अभी होगा आने वाले कल में. Okay,
So now rule for forming these type of sentences are subject plus will or shall plus verb first form plus object. Okay, now you must be thinking that will कहाँ आएगा और shall कहाँ आएगा. So look at this box. Will will come with words like he, she, it, they and you, and shall will come with I and we. So now looking at the examples, I shall visit my uncle tomorrow. According to the rule, I is subject, will और shall में से shall आएगा because as seen in the box I के साथ shall आता है. Visit is the again first form of verb. My uncle tomorrow is object. Okay, understood what is simple future tense? So okay children, now I would like to give you a quick recap of all three type of tenses that we discussed today. We studied about simple past tense, simple present tense and simple future tense. So looking at the examples, simple present tense is I walk to the store, यानी कि ये daily routine में होता है काम. It's a journal truth. It happens daily. It's a habit. Fine. Simple past tense is the action which has already been taken place in the past. So according to the rule, subject plus verb second form plus object, and that is applied in this sentence. Simple future tense is anything that will happen in coming future. So the rule is subject plus will or shall plus verb first form plus object. Now let's give a quick revision. So let's see the first sentence. We dash to office tomorrow. Tomorrow means simple future tense. It will happen in coming future. So the rule is subject plus will shall plus verb first form plus object. We will take shall along with it, and go ki first form is go. So we shall go to office tomorrow. Second sentence, she dashed to temple every day. Every day is a habit, right? Every day यानी कि वो रोज़ जाती है, so it's a habitual work that is going on. So it is simple present tense. Simple present tense का rule क्या होता है? Subject plus verb first form plus s or es plus object. So she comes to temple every day. Comes क्यों आया? Because she is a singular subject. So it will take s or es along with it. Third sentence is Rosie dashed beautifully yesterday. Yesterday यानी कि कल हो गया, बीता हुआ कल. It's past tense, and rule for simple past tense is subject plus verb second form plus object. So verb की second form, dance की second form क्या होती है? It's danced. So Rosie danced beautifully yesterday. Next sentence, he dashed for 2 hours in evening. वो शाम को 2 घंटे के लिए सोएगा. So आने वाला कल future tense. So what would be the answer? He will sleep for 2 hours in evening. Okay children, that was it for the video. Thank you so much for watching it. We will continue with the remaining tenses in next video. Till then, solve the assignment that I have attached in the description box and see the video thoroughly. If you like the video, please hit the like button, comment down below and subscribe to my channel Yashika Classes. Thank you.